Okay, ji, let's start our common gate amplifier in multisim. So the components required, again we will start with our transistor. Let's take again, let's say again we will go for the same one which we use in common drain, and let's move toward your basics. Resistors आपके होंगे जी 10K, okay, there were two sets of 10K, so let's place one more, 1 2 and 3 resistors and 2 capacitors. Capacitors are now we need a ground which we can take from sources, and VDD, yes, VDD is required, and a ground. So I guess this is all. Let's just place two grounds, or if you want to just use one then this is fine as well. अच्छा जी, all connections में से these are the three components which we need to flip, but अच्छा, let's start with our connection, and I will again label them because labeling say it's easier to connect. So this is my R of S. I require a 10K or R of D and R of L. Where is my last one? Okay ji, these are my resistors. And my voltage, let's just use value of 10 to 15 is normally fine enough to just go into your saturation mode, right? अच्छा जी, ये आपका कनेक्शन हो जाएगा. I did the same mistake again. अच्छा, अगेन आपका जो मल्टीमीटर है आइदर कनेक्टेड हेयर या आप इसको डाउनवर्ड्स कनेक्ट कर दें. ये आपका कनेक्शन जाएगा हेयर, ठीक है. ये आप इसको सेट कर दें फॉर योर करंट, कनेक्टेड हेयर, एंड फाइनली ये आपका ग्राउंड हो गया. सेकेंड आपका जो जाएगा, दिस शुड बी ग्राउंड एज वेल. एंड ये आपका सेकेंड कैपेसिटर जाएगा. अच्छा, इफ दिस इज द रेजिस्टर जिसके अक्रॉस आप कनेक्ट कर रहे हैं योर इनपुट, इट मींस एमिटर भी आपका यहीं पे कनेक्ट होगा.
Finally, adding our function generator and our oscilloscope. So input was given to your ओके जी, ये ग्राउंड ज़रा कनेक्शन दे देते हैं. This should also be grounded. This is your function generator. Give it a frequency of 1k and amplitude of, again, let's start with 5. ये आपका कहाँ पे कनेक्ट होगा? With your capacitor on one side and your ground on the other side. अच्छा, let's play it and check what we are getting here. Our signal was approximately 5 milliamperes, right? Okay, drop your scale so you can get. अच्छा, ये आपका बन रहा है output. So what's your input? Connect it to your positive side, and again this with your ground. I guess this is ground, so just connect it with it. अच्छा, अच्छा, if you can get a clear version of it, so let's just drop more. ठीक है, there is a minor amplification. If you consider a common source, अगर आप नोट करें, common source में there was much larger amplification जब आप इस सिनेरियो को सेटअप कर रहे थे, right? But यहाँ पे आपकी amplification जो है, this smaller one is your input signal, right? And जो minor amplification, अच्छा, this negative values means कि मैंने connection reverse कर दिया, but ये जो channel A version है, this is your positive side signal with the value of -5.6 and the B channel is 4.9. It means कि आपकी voltage amplification do exist in common gate, but it is not as good as that of common source. But yes, it do exist here, right? अच्छा, जो current आपका है, it was a current buffer, right? So yes, there is a set of difference, but both currents are in nano, 470 and this is 407. So नॉट एज सच एम्पलीफिकेशन, ठीक है, उतना एम्पलीफाइड नहीं था जिस तरह प्रीवियसली में देर करंट वाज इन पीको एंड जो आपका वर्जन आ रहा था आउटपुट पे. अच्छा, इशू हेयर इज कि आपका ऑसिलोस्कोप जो है वो बेसिकली एम्पलीफाइड करंट सिग्नल्स को नहीं दिखा सकता. सो आई एम जस्ट गिविंग यू अ रफ आइडिया कि इफ़ यू वांट टू सी कि जहाँ पे आपका इनपुट सप्लाई हो रहा है वहाँ पे आपका करंट क्या बनता है एंड आउटपुट पे क्या बनता है, सो यू कैन गेट अ रफ आइडिया ऑफ कि दिस स्पेसिफिक जो कम्बिनेशन है ये आपकी करंट बफर के तौर पर एक्ट कर सकती है और ये वोल्टेज बफर के तौर पर एक्ट कर सकती है. सो येस, यू कैन गेट अ रफ sketch of your voltage amplification, your current values accordingly, right? So let's just add one more thing and move toward your simulation. All you would be doing in this lab is कि आपने input voltage की values लेनी है, output की लेनी है with the help of your oscilloscope, and then you will be calculating your gain. तीनों labs जो आपकी common source, common gate, common drain की थी with using JFETs. Change your JFET if you want to. Just use a p-type and just flip VDD towards -15 or -10, right? And all you would be doing is that you would be noting the frequency, change your frequencies, right? I have just used single frequency of 1000. आप इसको change कर लें, आप इसको 500 से start लें, then 600, 700, 800, 900 according, right? Then you would be using your input voltage, output voltage, and finally voltage gain, right? अच्छा, तो voltage की gain की values आएंगी. You will be plotting those with your frequency
इन मैनुअल वर्जन, ठीक है। मैनुअली भी आप इसको परफॉर्म करेंगे, बट प्लस यहाँ पे आप एक जो रफ स्केच आपका होता है, ठीक है, इट विल ऑल्सो कैलकुलेट वैल्यूज फॉर यू, राइट। यू कैन ऐड इट, ठीक है। यू आर स्टार्टिंग विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ लेट्स से वेरी माइनर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इतने हर्ट्ज, एंड you are stopping at a frequency of 10 gigahertz, which is a large value, right? And you are going for decibel scale, and you want the output of, what's your output? Your output is across terminal number 3, so it means V3, right? Add it, and let's just simulate it, ठीक। सो अप टू ये जो आपका एग्जैक्ट ग्राफ है, दिस इज बेसिकली दी सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ योर गेन। ये वैल्यूज आप मैनुअली भी एक दफ़ा प्लॉट कर लें बेशक, ठीक है। ये आपको एग्जैक्ट स्टार्ट एंड ड्रॉप दिखा रहे हैं, बट मैनुअल में यू कैन जस्ट गो एंड चेक के हाउ योर गेन इज चेंजिंग, राइट, विद योर चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। दिस इज योर फेज, राइट। जब आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ डील करते हैं, देयर इज अ set of values of phases and set of values of magnitude as well, right? Magnitude you are calculating with the help of v out by v input, ठीक है, जो आपका gain value है, right? So this is the plot of your gain values, right? And you are starting with frequency of 0.01 जो मैंने choose किया था, and going up to 10 gigas. So this is how your plot would be, and you can add this plot in your lab copies as well, but do add a plot of your calculated values by changing frequencies manually, right? ठीक है, यहाँ से आप अपनी frequencies change करेंगे, and their plot accordingly जो v output and v input की values आएंगी, those would be used to calculate the gain, and इससे आप अपना figure जो plot है उसको fill करते हैं, finally you will draw a graph, right? So you can clear आपको हो गया होगा what's the difference between common gate, common source and common drain, right? Which one is current buffer, which one is voltage buffer, uh, how they amplify voltage, what is an amplifier, right? How we set the self-biasing and DC quiescent points, right? So this is all for your amplifiers version, right? इसके बाद we will be going toward op amp. So that is all for your today's lab.